Now we are going to solve illustration 3 on page number 290. From the following trial balance of Rina Enterprises, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 18 and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 18. Particulars, debit, credit. So 3 columns is given to us. Particulars वाला column है, debit column है. Again reminding you, डेबिट साइड का जो कॉलम है वो किधर किधर जाएगा, 3 जगह पे जाएगा. ट्रेडिंग डेबिट, पीएनएल डेबिट, बैलेंस शीट, एसेट. क्रेडिट कॉलम का जो अमाउंट है वो कहाँ पे जा सकता है, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी. सो विल गो स्टेप बाय स्टेप, विल फॉलो द ऑर्डर्स. ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे, 2 ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट 45,200. कैपिटल, वी ऑलवेज राइज कैपिटल इन द इनर कॉलम. We always write capital in the inner column. Then next is drawing. Drawing should be less from capital. So capital less drawing 20,000. After deducting the amount, we have to write in the inner column because there is still one more adjustment on capital, which is net profit or loss. Then next one is furniture, balance sheet, asset. Prepaid insurance, whenever prepaid insurance, any prepaid expense given in the trial balance, so it has a single effect on balance sheet asset side. Debtors and creditors. So debit amount will be our debtors and the credit amount will be our creditors. Debtors के ऊपर 2 एडजस्टमेंट्स है, इसीलिए मैंने टोटल 3 लाइन छोड़ा है. करेक्ट है, डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, इसीलिए हमने 3 लाइन छोड़ा है. परचेज एंड सेल्स. परचेज इनर कॉलम में लिखेंगे, डेबिट अमाउंट विल बी माय परचेज अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट विल बी माय सेल्स अमाउंट. प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी विल बी ऑन द एसेट. अगेन देयर इज एडजस्टमेंट ऑन इट, सो आई हैव रिटन इन द इनर कॉलम. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, एसेट डायरेक्टली आउटर कॉलम. फैक्ट्री इंश्योरेंस. See, they have specifically mentioned factory insurance. Only insurance will be always related to office, but whenever they specify factory insurance, so it is always trading debit. Where it will go? It will go trading debit. Audit fees, P&L debit. Outer column, no adjustments are there. Carriage inward. Carriage and carriage inward, these both always go in trading debit. Carriage and carriage inward both will go where, in trading debit. So 2 carriage inward, inner column written because adjustment is there on it. उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग. एसेट एडजस्टमेंट है, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग लिखकर इनर कॉलम में लिखा है. देन रेंट, again nothing is mentioned, so we always assume it is related to office. So to rent 7120 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है. रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, सो इट इज ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट. सो वी हैव टू राइट एंटायर चार्ट. करेक्ट है, टू ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स plus new RDD minus old RDD. You have to write this entire chart and whenever the amount will come, we will fill it over here. So old RDDs came over here, 6,000 माइनस करना, इसीलिए आप कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे. Then carriage outward, this is related to sales transport, so carriage outward will come in PD debit. Return, see return given on both the column. Return is been given on both the columns, so always remember opposite. See, purchase we write on debit, to purchase return always credit side. Sales we write on credit, so sales return always on debit. So amount which is given in debit column is my sales return and amount which is given in credit column is my purchase return. So respective amount written over here, 2000 माइनस करके अमाउंट बाहर लिखेंगे, 9000 माइनस करके अमाउंट बाहर लिखेंगे. The next is discount. Now discount is given in both the column, debit also and credit also. So जो डेबिट में दिया है वो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट अलाउड किया है. So we will write on the debit side to discount 1000 और क्रेडिट में जो अमाउंट दिया है that is towards discount received.
हमको डिस्काउंट मिला है तो ये हमारे लिए क्या है, अदर इनकम है, तो इसलिए मैं कहाँ पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय डिस्काउंट. The last one is commission received, specifiedly said commission received, so always on credit side, by commission received 8,000. So this is how we will done with our posting part. Now the next, adjustment. Adjustment always we write twice in our answer. Adjustment always we write twice in our answer. First adjustment, write off bad debts rupees 2,000 and provide 2.5% reserve for bad debts on debtors. So basically these are two different adjustments. We'll do one by one. The first one is towards my bad debts. So adjust the bad debts which is given in adjustment is always new. What? Bad debts which is given in adjustment is always new. So first I will write it down over here in my chart where I already make a space for new bad debts. As this old BD we will get it a trial balance. We have already done trial balance posting, so यहाँ पे कोई नहीं है तो we'll put a dash over here. New BD, the amount is 2,000. We have to write in inner column. Correct है. Now the second effect, as said earlier, adjustment always has a two effect. So new bad debts मैंने यहाँ पे चार्ट में जगह बनाया था, वहाँ पे लिख दिया. Second effect आप कहाँ पे लिखोगे? Second effect कहाँ पे लिखोगे? डेटर्स में से माइनस करोगे. डेटर्स में से माइनस करोगे. हाउ मच अमाउंट? 2,000. और माइनस करके अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, क्योंकि अभी और एक एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर बाकी है. सो दिस इज अ हाफ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एडजस्टमेंट डन. न्यू बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम हियर. सेकेंड इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स. Not less from here, we have to write in chart, and less from debtors. 2.5% reserve for bad debts on debtors. That is 2.5% we have to calculate on debtors. So do remember, on this 68,000 we will calculate 2.5%. That is a revised amount of debtors. So we called it as a new RDD. What we will call? New RDD. New RDD. How much? 2.5%. Correct. So the amount will be 1,700. On which amount we have to calculate? Revised debtors, that is 68,000. Minus करके we'll write the amount in the outer column as all the adjustment is been done. Now as said earlier, again to recollect, एडजस्टमेंट एज अ टू इफेक्ट. एक यहाँ पे आपने लिख दिया, अब दूसरा आपको सोचना है कहीं तो लिखना है. कहाँ पे लिखेंगे? वी ऑलरेडी मेड अ स्पेस फॉर न्यू आरडीडी इन चार्ट. तो 1700 हम यहाँ पे लिखेंगे. करेक्ट. नाउ दिस ऑल इज डन. Old BD is not there in the question. New BD we got it from first adjustment. New RDD we got it from first adjustment, that is from debtors, and this 6,000. Now you will look at over here carefully. हमको 6,000 माइनस 6,000 है, 2,000 है और 1,700 है. तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो माइनस में आएगा. कैसे आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि 6,000 माइनस है. So we have to write in bracket. We have to write in bracket. This is how we have done with our first adjustment. Now the second adjustment is closing stock valued at cost price 46,000, market price 40,000. So what is the thumb rule for closing stock? The amount whichever is lower, whatever be the amount, cost or market, the lower amount will get classified. So lower amount is 40,000. So our closing stock, by closing stock amount is 40,000. Second effect where to write? Balance sheet asset. Closing stock 40,000. Correct. The next one is provide depreciation at 5% on building and 10% on machinery. Do remember the percentage carefully. Depreciation at 5% on building. So less depreciation at the rate
5%, 1,40,000 का 5% comes to how much? 7,000, correct? 7,000. Outer column 1,33,000. The next is on plant and machinery, depreciation at the rate 10%, correct? So the amount will be 5,000. Outer column 45,000, माइनस करके लिखना है, so write in bracket. Now what to do? You have to write the second effect. Don't forget to write the second effect. How we'll write it down? To depreciation, underline it, both the depreciation we will write it down. Plant and machinery, $5,000, and land and building is how much? 7,000. Outer column 12,000, correct? We write both the amount in inner column, then make a total of it and write in outer column. Then the next adjustment is rent prepaid, correct है? Rent prepaid, ठीक है? So prepaid expense less from particular expense. Second effect balance sheet asset, यहाँ पे less करेंगे. Prepaid expense amount is 3,560. After minus it, the amount will remain same. It is exactly half. Second effect, where to write? Asset side. Prepaid rent amount is 3,560. Next is outstanding carriage inward. Any expense which is outstanding, add to particular expense. Second effect balance sheet liability. So carriage inward in trading debit, amount is 1,200. Outer column 3,000. Second effect, where to write? Balance sheet liability. Outstanding carriage inward. Amount is, be careful when you write the amount. It is not this 3,000 is outstanding, the 1,200 the amount is outstanding. So this amount we supposed to write in balance sheet liability. So this is how we have done with the posting part also and adjustment part also. Now how we'll do? Now we have to close the sum. करेक्ट है? क्या करेंगे? यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ दीजिए, सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन, बोथ द साइड. Then what you will do? Take the pencil. With the help of pencil, we'll write the amount over here below the single double line. Below the single double line. ठीक है? ट्रेडिंग क्रेडिट का टोटल कितना है? 1,58,000. ट्रेडिंग डेबिट का टोटल कितना है? 1,22,200. Which side is more? Credit side is more. This is 1,58,000. So now with the help of pen, write it down. 1,58,000. 1,58,000. We have written on both the side. अब यहाँ से माइनस करके जो माइनस अमाउंट आएगा वो कहाँ पे लिखना है आपको? जो माइनस अमाउंट आएगा वो कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे ऊपर लिखना है. करेक्ट है? माइनस करके आएगा आपका जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 35,800. दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर. व्हेनेवर आई राइट बैलेंसिंग फिगर, इट मीन्स व्हाट? बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करके वो अमाउंट आया है. अब ये जीपी को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम? ये जीपी को नीचे ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल में. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, व्हाट विल बी द टोटल? सेम 35,800. नाउ व्हाट टू डू?
Now we'll close profit and loss account. So the closing procedure is same. With the help of pencil, we have to write both the side. With the help of pencil, we have to write both the side. Total 3500 plus 7 plus 8 15 5800 क्रेडिट साइड का टोटल है, करेक्ट है. डेबिट साइड का टोटल. सो नाउ बी केयरफुल व्हेन डू डेबिट साइड का टोटल. दिस अमाउंट 21,000 3560 8360 1000 एंड 12,000 ये सब अमाउंट प्लस होगा और सिर्फ ये 2300 दिस 2300 माइनस होगा. ये 2300 ये सब अमाउंट में से माइनस होगा एंड देन यू विल गेट द पीएनएल डेबिट का अमाउंट. देन यू विल गेट द पीएनएल डेबिट का अमाउंट. व्हाट इज दैट अमाउंट इज 43,620. Now which side is more? Which side is more? This side is more, credit side. So दोनों साइड वो अमाउंट पेन से लिखेंगे 5800. So when I am saying my credit side is more, it means it is a net profit. यहाँ से माइनस करके अमाउंट ऊपर लिखना है, यहाँ से माइनस करके अमाउंट ऊपर लिखना है. So what we will write? नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट. करेक्ट है. 5800 माइनस 43,620 विल गिव यू 7180. अब ये 7180 कहाँ पे लिखेंगे हम? कैपिटल में ऐड करेंगे. ऐड नेट प्रॉफिट 7180 outer column 287180. Then we'll make a balance sheet total. So after making this total, you will get a final answer of 417,630. 417,630. So this is how we'll do the final balance sheet total. Is that clear? Sir, bye.